Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लेकर आए हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है एस रंगाबाशी। Thank you, Nikhil. The top stories. Domestic share indices log modest losses. Sensex closes near 61,700 points, while Nifty settles below 18,400 level. Global stocks fall amid investors' concern over interest rate hikes by central banks and fear of economic recession. And Brent crude price rises above $80 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 61,700 अंक और निफ्टी 18,400 अंक के स्तर से नीचे आकर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजार में आर्थिक मंदी और केंद्रीय बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच निवेशकों की चिंताओं के चलते गिरावट का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर। और तमाम व्यापारिक खबरों पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन जी को, जो फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। हेलो। हेलो सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट देखी गई। बॉम्बे शेयर बाजार 61,700 अंक के आसपास और निफ्टी 18,400 अंक के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 104 अंक लुढ़ककर 61,702 पर आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक नीचे आकर 18,385 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.27% की बढ़त रही और स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। Well, as Nikhil just mentioned, the BSE Sensex and the NSE Nifty today witnessed modest losses. Index of top 30 companies Sensex closed above 61,700 points, while the Nifty index of top 50 companies ended below the 18,400 level. Both indices declined amid negative cues from global share markets. The Sensex fell 104 points to settle at 61,702, and the Nifty also slipped 35 points to close at 18,385. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index gained 0.27% and the small-cap index ended almost flat. In the Sensex pack, 9 companies posted gains while 21 logged losses. TCS was the top gainer as it added 1.3%, followed by Reliance, which surged 0.8%. IndusInd Bank gained 0.6%. On the other hand, Tata Motors declined 1.8% and Hindustan Unilever slipped 1.6%. And Bharti Airtel also fell 0.8%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 sectors fell while 3 logged gains. Telecom sector gained 1.3% and realty added 1%, while the energy sector index slipped 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,597 companies gained while 1,940 shares fell. Shares of 120 companies, however, remained unchanged. And to discuss the stock market action, we have with us business journalist Sushma Ramachandran. Sushma, a warm welcome to Market Mantra. Thank you, Ranga.
Yeah, to talk about the stock markets, we have seen, ups and downs in recent times and also massive ones. But somehow it seems as if the Sensex, is very comfortable around that, 62,000 level. And also the Nifty, is around this 18,400 level. This, despite, in the global arena, there is, major upheaval. But despite that, the Indian stock markets are holding their place, isn't it? Yes, that in fact is, that's what makes India stand out among the rest of the world because other emerging economies have faced a very difficult situation with foreign institutional investors pulling their funds out and, bringing them back to developed economies like the US, where the Federal Reserve is raising rates, and obviously every investor wants a higher return on their on their funds. But in India, on the other hand, we have had one of the things that has shored up domestic markets is the faith of the domestic investors, and domestic investors have poured in money into the stock markets, and they have kept the markets stable. So this is of course the way in which India is almost, let's say, an outlier as far as the emerging economies are concerned. But of course we have to see what happens. But as you rightly said, it's very comfortable at the Sensex is very comfortable at about 61,000. This is one of these highest points, and the Nifty also at 18,385. So these are high levels at which both the Sensex and Nifty are ruling just now. And Sushma, I also want to talk about the central banks across the globe, and more specifically the Federal Reserve and Bank of England. They have, again, as expected, raised interest rates by 50 basis points, whereas our own Reserve Bank of India just hiked it by 35 basis points. Do you think in times to come, in the next couple of months, we will kind of also, keep up that pace of hiking interest rates? Well, we have to compare the scenario in these two countries to India, and of course, in that context, one must mention, of course, that the Bank of Japan has just raised interest rates by about 25 basis points, and it's one of the countries which had all this time, all the developed economies had been raising rates, but Japan had been, holding steady. But coming to the US, you don't forget that the inflationary pressures in these two countries are much higher than in India. I mean, they're in the past, of course, and traditionally, inflation is much higher in developing economies, whereas it has always been in the range of about 2 to 3 or maximum 4% in developed economies. In Japan, for instance, it's still about just 3%. In the US, however, right now it's about 8%. In the UK, it's 11%. Europe also, all over Europe, it's about 11%. So you are having the scenario, the situation in which central banks of these countries, and especially the very influential Federal Reserve of the United States, has been very aggressively hiking rates. So their focus, of course, is to keep inflation under check. And as you rightly pointed out, the Central Bank of India has also been raising interest rates, but at a more modest pace, because obviously the target for the target band of inflation is higher in 2 to 6%, and the latest data shows that in November inflation had cooled down to about 5.88%. as opposed to nearly 7.8% in April. So the role of the central bank now is obviously going to be moderate, and it's going to move at a different pace compared to the central banks of the US and the UK. सुषमा, अभी जो हम मौजूदा परिस्थितियां देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो बाजार में सकारात्मक रुख तो हमें दिखाती हैं, लेकिन जो डेली का ट्रेंडिंग अगर हम देखते हैं तो बदलाव हमें साफ नजर आता है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य से अगर हम तुलना करते हैं तो भारतीय बाजार में स्थायित्व तो हमें काफी अच्छे से नजर आता है, और यही वजह रही कि निवेशकों की भी उम्मीदें भारतीय बाजार से कहीं ज्यादा सकारात्मक रही हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल वही है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो मार्केट है
इस वक्त अगर आप देखें तो खैर थोड़ा सा जो गिरावट आज आई है, कल भी गिरावट हुई थी 600 पॉइंट, लेकिन फिर भी जो लेवल सेंसेक्स पे पहुंचा है 61,000 वो काफी ऊंचा है। और जो जिस तरह लॉन्ग टर्म आपने बात की, लॉन्ग टर्म जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर हमारी जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में उन्होंने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट काफी मजबूत रही है। और वो जो बेरिश ट्रेंड सब जगह विश्व भर में हो रहा है वो हमारी मार्केट्स में नहीं हो रहा। हाँ, वॉलेटिलिटी है और वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो असर है उसको हम नाकाम नहीं सकते। जरूर जैसे आज बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है, उसका असर हुआ है। जो चीन में परिस्थितियां हैं उसका असर होगा, और जो फेडरल रिजर्व और यूके की जो सेंट्रल बैंक की जो उनकी जो एक्शंस है उनका भी असर होगा जरूर। तो वॉलेटिलिटी रहेगी हमारी मार्केट्स में। Yeah, and Sushma, let's also talk about the FIIs, the foreign institutional investors. Traditionally, over the years we have been seeing that in the month of December there used to be a kind of sell-off just before the Christmas and New Year holidays, and FIIs would kind of try and square up the position before going on the holiday. But this time around, there has been no such movement, and markets are stable, FIIs are doing well. What could be the possible reasons? I think it is precisely what I have been talking about, the fact that there is stability more or less in the Indian markets, as I talked about volatility, but volatility is relative compared to other markets around the world. And the valuations are, of course, by the way, FIIs do consider the valuations of the stock markets right now to be fairly expensive. It's not that they consider them cheap, but the very fact that the India growth story is a credible one. The fact that India is right now assessed to be the fastest growing economy in the world. It is whether it is 6.9% or whether it is 7%, it is going to be the fastest growing major economy in 22-23. So this is something that is a reality, and these basic fundamentals are what is standing the Indian stock markets in good stead. And as I said, they are absolutely standing out compared to the markets in the rest of the world. Yeah, but FPIs have been kind of off and on pumping in money, and this is the fourth month where the inflows have been on the positive side. The net inflows have been there. Do you expect this kind of a trend to continue or to increase in times to come, given the global scenario? And as they are saying, the global scenario is kind of gloomy. It is in fact also quite unusual that the FPIs are pumping money into the Indian markets at a time where everywhere else they are pulling out. So I would not hazard to guess as to say whether they would continue this trend. It looks like it for the last 3 months, but I think about 6 months ago we had, I think around July also, we also had this trend that the FIIs were coming back, and then again they pulled out. So it could be a temporary phase. But no doubt they are thinking, of course, also the fact that the central bank here is going to moderate its stance. It looks likely, given the fact that inflationary pressures have eased to a large extent. So the scenario, the economic scenario here is definitely better than elsewhere. At the same time, if aggressive rate hikes continue, the Federal Reserve continues to do that, there would be the temptation to pull money out from here. And right. Sushma, it's time now for a quick break, but we will continue the discussion after the break. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 870001
4242 पर। 8700014242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। सुषमा, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जहां तक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बाजार में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमेशा ये बातें कही जाती हैं कि भारतीय बाजार जो है वो कहीं ना कहीं अन्य बाजारों से ज्यादा स्थिर है। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो ये भी संदेश जरूर निवेशकों के मन में जाता होगा कि जब कंट्री आगे बढ़ रही है तो हम भी कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और अभी के हालात अगर हम देखें, खासतौर पे ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है, तब इस तरह की बातें ज्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये तो लेकिन हमें थोड़ा सा अगर हम पीछे 2 साल पहले की जो परिस्थिति है वो देखें, 2020 में जो था कि हालांकि पूरे विश्व भर में मार्केट्स की जो दुर्दशा हुई थी, उस वक्त काफी सारी जो निवेशक थे और जो स्टडीज आई हैं उनमें ये पता चला है कि ये जो निवेशक थे वो काफी सारे यंग लोग थे, यूथफुल पीपल, जिन्होंने अपना पैसा कई और जगहों से स्टॉक मार्केट्स में डाला, इक्विटी में डाला। और उस वजह से अगर आप मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल कंट्रैक्शन हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ, कंट्रैक्शन हुआ 2020 में, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट आगे बढ़ती रही, बुलिश ट्रेंड चलता रहा क्योंकि इतने सारे निवेशक आ गए थे मार्केट्स में। तो ये जो असेसमेंट है निवेशकों का और ये भी यंग लोगों का कि हम अपना पैसा इक्विटी में लगाएं, अपना पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक मार्केट्स में लगाएं, इसका ये दिखाई देता है कि वो उनका फेट है कि इंडिया का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में होगा। और ये जो जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मजबूत बनाई है हमारी स्टॉक मार्केट। और आपने वो बात कही है G20 की, वो भी काफी इसमें वैलिड है। इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट बना है और G20 बहुत पावरफुल एक फोरम है जहां पर ज्यादातर जो सबसे बड़ी देश भर में, विश्व भर में, दुनिया भर में जो इकोनॉमीज हैं वो इसके मेंबरान हैं। और इसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस इस वक्त काफी ज्यादा हो सकता है। और कोशिश यही है कि हम लीडरशिप दें ये इन 20 देशों को। और आगे के दिनों में भारत ने ये भी कहा है, ये सरकार ने ये भी कहा है कि और भी देशों को इसमें जोड़ेंगे जो G20 के मेंबर्स नहीं है। तो ये इकोनॉमिक लेवल पे लीडरशिप हमारे देश की लगता है कि काफी आगे चलेगी। और जैसे आपने कहा कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है शायद आगे जाके, पर वो उसका थोड़ा टाइम लगेगा। और सुषमा, जहां तक मंदी का जिक्र किया जा रहा है, बार बार इसका उल्लेख हो रहा है, हर जगह इसकी बात हो रही है, इंडिया में भी इसका जिक्र हो ही रहा है, तो भारत का किस तरह का असर इस पर पड़ सकता है या आप देख सकते हैं इसको? मंदी का असर तो होगा हमारे देश में। ये नहीं कि हमारा देश बिल्कुल इम्यून है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं इनका असर होगा और अभी हुआ है। अगर जो हमने इन्फ्लेशन की बात की इस साल, ये इसी वजह से जो एक्सटर्नल इन्फ्लेशन के आने से जैसे तेल के जो दाम बढ़े थे और जो खाने के दाम, फूड प्राइसेस बढ़े थे, ये क्योंकि इतनी सारी चीजें जैसे सनफ्लावर ऑयल हमारा बहुत महंगा हो गया था और ये क्रूड ऑयल महंगा हो गया था। तो इन चीजों का असर हमारे देश में हुआ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए। मतलब सेंट्रल बैंक ने इसके ऊपर काफी मतलब कड़ी मेहनत की कि ये नीचे ले आए। तो ये नहीं है कि हम इससे मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी इम्यून टू इट, होगा जरूर, लेकिन लगता है कि वी हैव बीन एबल टू फेस दिस चैलेंज। Right. Let's move on to some other stories now. Minister of New and Renewable Energy R.K. Singh has said that the government has taken several steps
to scale up rooftop solar capacity in the country. He said a national portal for rooftop solar has been launched where residential consumers from any part of the country can apply for installation of rooftop solar panels. They can also get subsidies directly into their bank account under the rooftop solar program. In a written reply in Rajya Sabha today, Mr. Singh said that an online portal has been developed for expediting project approval, report submission and monitoring the progress of implementation of the solar project. सरकार ने कहा है कि सागरमाला योजनाओं के अंतर्गत अब तक लगभग 1,891 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रमुख बंदरगाहों, गैर प्रमुख बंदरगाहों और राज्य समुद्री बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 217 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि मंत्रालय ने सागरमाला योजना के अंतर्गत अब तक 151 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सुषमा जी, जहां तक इस तरह की जो योजना है सागरमाला, जिसके लिए स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने एक दृष्टिकोण अपना रखा है सामने, और हम ये देख रहे हैं कि खुले और समावेशी हिंद क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भारत ने अपनी एक स्थिति भी वैश्विक पटल पर दर्ज कराई है, चाहे वो क्वाड की हम बात कर लें या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारे लिए? देखिए, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जो आयात निर्यात नीति है वो इसी के बेसिस पे इतनी तेजी से चल रही है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इतनी तेजी से चल रही है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और काफी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन हमें इसमें बहुत ज्यादा और मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कॉस्ट हैं, जो डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिले इन मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो इन इम्पोर्ट्स, उसका बहुत असर पड़ता है। और मेरे ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट है सागरमाला के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे 2017 हमारे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और इसके अंदर 151 प्रोजेक्ट सागरमाला के अंदर है। इनका जो अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट ये बहुत ही जरूरी है आर्थिक दृष्टि। And moving on now, the Enforcement Directorate has seized assets worth more than 33,000 crore rupees related to fugitive economic offenders, including Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi. Out of this, assets of over 15,000 crore rupees have been restituted to the public sector banks, and banks have realized 7,975 crore rupees by the sale of these assets. This was stated by the Minister of State for Finance, Dr. Bhagwat Karad, in a written reply in Rajya Sabha today. Very briefly, Sushma, it is often said that, these people run away from the country after doing all this. But what ED has done is equally important, isn't it? A substantial chunk of money has been recovered. I think this is something that a little more focus needs to be put on this. The fact that we should be able to get back the money that the country has lost due to fraud, due to economic offences. Because we have been focusing on individuals that, X person has left the country or Y person has left the country. I think we should focus on the fact that what has happened to the assets that they have left behind. Have we been able to acquire those assets? And you are saying that 35,000 crore rupees of these people, has been brought back to the government, and 15,000 crores has come back to public sector banks. So this is a huge amount of money. And I think we really, honestly, of course, these people who have gone, of course, they need to be, they need to be punished for whatever they have done. But I think it's very important for the country to get back the economic assets. That's actually more important.
सरकार ने आज देश के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई जारी किया। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। वहीं श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले 3 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन तथा मिजोरम में आइजॉल। और अब एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो अमरीकी शेयर बाजार में गिरावट को देखते हुए आज एशियाई शेयर बाजारों में भी सुस्ती देखी गई। जापान का निक्केई सूचकांक 2.5% के नुकसान में रहा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.3% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% की गिरावट में रहा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक आज 0.1% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की हम बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.1% के नुकसान में चल रहा था। जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक 0.4% नीचे आकर कारोबार कर रहे थे। Well, let's move on to the American markets as well. Wall Street closed lower yesterday for a 4th straight session as investors shied away from riskier bets. Investors remained worried that the Federal Reserve's tightening campaign could push the US economy into a recession. So Dow Jones Industrial Average declined 0.5% and the S&P 500 fell 0.9%. The Nasdaq Composite plunged 1.5%. Onto the oil scenario now. Oil prices today rose, supported by a softer dollar, but gains were capped by uncertainty over the impact of the rising COVID-19 pandemic in China. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.20 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading at $76.20 per barrel. सुषमा, मौजूदा परिस्थितियों में जो ऑयल की हम कीमत देख रहे हैं $80 प्रति बैरल के आसपास जो फिलहाल अभी है, कहीं ना कहीं ये विशेष परिस्थितियां इस वक्त ऐसी बनी हुई हैं जो हमारे देश के लिए सकारात्मक होने की संभावना को बढ़ाती हैं। आपके अनुसार ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ठीक। अब $80 तो यही लेवल है जो हमने जब बजट हुआ था, जब बजट पेश हुआ था फरवरी में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने ये कैलकुलेशन ये की है कि तेल के दाम होंगे $70 या $75 पर बैरल ड्यूरिंग 2022, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की जो वार आई थी और फिर $140 तक ब्रेंट क्रूड चला गया और पूरे इस साल में करीबन मेरे ख्याल $100 पर बैरल हुआ है। अब पिछले 1 महीने से ये जो लेवल आया है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और देखना ये है कि आगे वाले दिनों में यही रहेगा। जी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 495 रुपए ऊपर चढ़कर 54,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 1,568 रुपए मजबूत होकर 69,080 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना वृद्धि के साथ $1,817.40 प्रति ऑन्स पर था, हालांकि चांदी बढ़त दर्ज करती हुई $24.10 प्रति ऑन्स पर थी। Yeah, and Shushma, to talk about the gold prices, almost 500 rupees up and inching towards the 55,000 mark as far as the gold price is concerned. Do you think, the current geopolitical tensions, whether it is the Russia-Ukraine conflict or the, feared or apprehensions about global recession, all this is kind of fueling gold prices? Yes, gold is a safe haven asset and obviously it has gone up because of all these geopolitical developments that are continuing and nothing is moderating at that, in these areas. Yeah, and Shushma, thank you so much for joining us as always in this edition of Market Mantra. And before we close, let's take a quick look at the top stories that we are following for you in this edition. Domestic share indices log modest losses. Sensex closes near 61,700 points, while Nifty settles below 18,400 level. Global stocks fall amid investors' concern over interest rate hikes by central banks and fear of economic recession. And Brent crude price rises above $80 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 61,700 अंक और निफ्टी 18,400 अंक के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजार में आर्थिक मंदी और केंद्रीय बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच निवेशकों की चिंताओं के चलते गिरावट का रुख देखा गया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर रही।
Well, that's it in this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete round of all that's happening in the world of economics, business and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Namaskar. Goodbye.